Hello, student of standard 9. Your term 2 is likely to start, final exam. So I am making this video to make you understand that how you are going to apply your concept in physics. The recapitulation, and unfortunately your pre-final some of the students have not done properly. So just you see, in term 2 total science marks is 40. You will get the 22 hours. In this term 2 exam, physics 14 marks, chemistry 18 marks and biology 8 marks. Total is 40 marks question will be there. Out of which physics 14 marks, from the gravitation 5 marks and the work energy 9 marks. Total 14 marks question will be there from the physics. In physics only 2 chapters are there. The basic formula of the gravitation we are going to discuss. The question will be asked of the concept of this particular formula. F is equal to G m1 m2 by r square. G is equal to G m by r square. जहाँ पर m क्या है? The mass of the heavenly object like earth. Similarly, the free fall, you have to go through the free fall, and the question related to the if the ball is falling towards the earth, then how we are going to take the G you have to take according to the convention positive. If ball is thrown upward, then G we have to take negative. That is a concept. And if a ball or the object is falling towards the earth, then it is termed as a uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Right? Object अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो हम बोलेंगे क्या? That uniformly accelerated motion होता है उसमें. And some more formula of this gravitation chapter is your that the difference between the mass and the weight. That also important part is there, difference between the mass and weight. And the question regarding this, that weight, the another formula m into g, weight, all the things. Weight is the force by which earth is attracting towards itself. Here m is the mass of the falling object and g is the acceleration. Small g is the acceleration due to gravity. Due to gravity. So these are the main points of this gravitation, and as it is considered as a uniformly accelerated motion, so we can apply the law, the equations of motion, like v is equal to u plus at. In place of a we are writing g. We can use the s is equal to ut plus half gt square. We can use v square is equal to u square plus 2gs. ये तीनों इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं किसमें? ग्रेविटेशन में. Why? Because uniformly accelerated motion is there when the object is falling from certain height, falling or going up. अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, then G is taken as positive. So these are the points. These are the equations which we are. If the object is going up, then the same formula will be V is equal to U minus GT. Similarly, S is equal to ut minus half gt square, and v square is equal to u square minus 2gs. ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है. ठीक है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्री फॉल विच आई टोल्ड यू. दिस क्वेश्चन ऑफ द ग्रेविटेशन यू हैव टू गो थ्रू इट प्रॉपरली. Regarding work and energy, work is equal to F S cos theta, which I told you earlier.
If any kind of doubt, you can see my video also. I have sent several videos. And what is this? F is the constant force as the displacement, and theta is the angle between the force and the displacement. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा. अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे करके मूव कर रहा है, फोर्स इज इन दिस वे एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन दिस वे, तो एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज जीरो, सो थीटा इज इक्वल टू जीरो, सो कॉस जीरो बिकम्स 1. So we are using in this, if the direction of the force and the displacement is same, we can use the work is equal to F and S directly. ठीक है, वर्क का ये बेसिक फॉर्मूला है. वर्क डन इज ऑल्सो इफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्पीड इज गिवन, वी कैन राइट हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं. यू कैन टेक आउट कॉमन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. वर्क डन निकालने का तरीका, ये वर्क डन बाय द इंजन और द मशीन और द एनी काइंड ऑफ vehicle whose initial speed and the final speed is given, then work done we can find out in this way. Then in case of this particular chapter, another point is that power is equal to work done by time. Work done is nothing but the energy consumed by time. Here in case of the you can use that energy, maybe the electrical energy or muscular energy. Electrical energy consumed. So if power is given and the time is given, time of use is given, then energy we can find out the power into time, that particular formula. And the unit of power is equal to, as the formula is this, so unit of work done is joule and time is second. So that joule by second is equal to watt. Watt is the unit of power. So 1 watt is equal to 1 joule by 1 second. We can define the 1 watt in this way. If a particular machine is doing 1 joule of work in 1 second, we can say power is of 1 watt. ठीक है. And in case of that electrical energy consumed, that unit means kilowatt hour is the unit of energy. That 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt hour, and 1 kilowatt hour is also known as unit. Unit is the commercial unit of electrical energy consumed. अगर मान लो इस एनर्जी को 1 किलोवाट आवर को एनर्जी का यूनिट है, इसको अगर कन्वर्ट करना है जूल में, तो दैट इज़ योर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल. कहाँ से आया? 1 किलो मीन्स 1000 and hour means 3600. So if you are going to multiply, you will get the 3.6 into 10 to the power 6 joule. Right? This is the way how you are going to apply, and more or less these formulas are there. But how you are going to solve the question according to the feedback which I got from your copies, the way of solving the question, like in case of pre-final questions, like for example this question number 1, how you are going to solve solution. Question number 1, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना होगा? फर्स्ट स्टेप देखो, सॉल्व करने का एक तरीका है. फर्स्ट स्टेप, फोर्स इनिशियल और बाद में बोलता है चेंज होगा, तो एफ फोर्स फाइनल. फोर्स इनिशियल क्या हो जाएगा? जी. दो ऑब्जेक्ट हैं मान लेते हैं m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमको मालूम है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास, एंड आर इज योर distance between the two objects. So and capital G is a universal gravitation constant. Now the condition is that when the distance between them is reduced to half. So here final क्या हो जाएगा? Distance becomes half, means r by 2. New distance.
R1 इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला FF क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 है तो G(m1 m2 बाई R1 स्क्वायर हो गया। अब R1 को हम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा R1 का वैल्यू G(m1 m2 बाई R1 की जगह R/2 पुट कर रहे हैं, तो R/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू G(m1 m2 बाई R स्क्वायर और बाई 4। ये 4 कहाँ आ जाएगा ऊपर में, न्यूमरेटर में 4G(m1 m2 बाई R स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस इज द इनिशियल, सो 4 टाइम्स ऑफ दैट F इनिशियल। सो हम लोग बोल सकते हैं द फोर्स बिकम 4 टाइम्स, फोर्स क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। दिस इज द वे। एक और क्वेश्चन था, अनदर क्वेश्चन गिवन दैट रिलेशन बिटवीन द लीनियर मोमेंटम, अनदर क्वेश्चन वाज दैट, और establish the relation between linear momentum and kinetic energy. Linear momentum and kinetic energy. Linear momentum and kinetic energy. Kinetic energy K is equal to उसका डायरेक्ट फॉर्मूला mv स्क्वायर। हमको लीनियर मोमेंटम भी मालूम होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी। अब यहाँ पर हम लोग अगर कोई रिलेशन निकालने का मतलब है कि हम लोग को क्या करना है, P का टर्म में इसको चेंज करना है। ये हाफ एम वी स्क्वायर तो है, अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, देयर विल बी नो चेंज। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 ट्वाइस m, ऊपर में क्या हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट, 2m हो गया ना, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी होल स्क्वायर बाई ट्वाइस m, दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी। और k इज इक्वल टू ये क्या है m इंटू वी, p मीन्स लीनियर मोमेंटम, सो p स्क्वायर बाई ट्वाइस m, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस m k, और p इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस m k। ये रिलेशन हुआ, लीनियर मोमेंटम दिया है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है, ये फॉर्मूला रिलेशन हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम में कैसे चेंज होगा, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दिस 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। One question was there, the 2 marks question. If the moon attracts, 2 marks question, second number question, moon attracts the earth, when why does the earth not move towards the moon? यहाँ पर देखिए moon, interesting question, moon and here the earth. Question is that moon attracts the earth, moon attracts the earth. If the moon attracts the earth, why does the earth does not move towards the moon? ये अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अर्थ भी मून को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों हो रहा है। नाउ द मून इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ, बट व्हाई नॉट अर्थ इज गोइंग टुवर्ड्स द मून? नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाई इट इज लाइक, वी नो F इज इक्वल टू m इंटू a, राइट। फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, दोनों तरफ से फोर्स है, फोर्स इज सेम, बट व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। अब देखो जिसका मास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पर मास ऑफ द मून इज लेस, सो अर्थ इज अट्रैक्टिंग अ फोर्स ऑन टू द मून, so with a greater acceleration. Why greater? Because mass of the moon is less, so greater acceleration is there, that's why moon is attracting towards the earth. rather ये acceleration हम earth अप्लाई किया और acceleration earth अप्लाई किया, acceleration moon कितना अप्लाई किया? force by mass, ये mass of the moon था। अब यहाँ पर moon के केस में force तो सेम है, moon के केस में moon जो
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन से इस अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, उस केस में अर्थ का मास है, ये अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई, तो एक्सेलरेशन इज नेग्लिजिबल, एक्सेलरेशन इज नेग्लिजिबल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थ ज़्यादा एक्सेलरेशन से मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून कम अट्रैक्शन से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज द रीजन। एंड सम मोर क्वेश्चंस हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ट्राई टू बी कंसाइज एंड इन केस ऑफ डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन का क्वेश्चन है तो हमको थोड़ा सा, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी का आया था, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, तो सिचुएशन हमको लेके चलना होगा। व्हाट इज दैट सिचुएशन, अ बॉडी इज हैविंग मास m, मास ऑफ अ कार मान लेते हैं, मास ऑफ द कार, मास ऑफ मान लेते हैं कार या व्हीकल, and it is moving with the initial velocity u, final velocity after t time it becomes v, that is the situation। t time के बाद u से v में इसका स्पीड चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया। अब हम लोग को सिचुएशन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स द वर्क डन, एनर्जी मीन्स द वर्क डन, दैट f इंटू एस। तो हम लोग को यहाँ पर ये जो कार है या व्हीकल है, दैट इज़ मूविंग, ये मूव कर रहा है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, देन वर्क डन निकालना है। वर्क डन मीन्स द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। अब एक्सेलरेशन का हम लोग को, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एस। इसका वैल्यू, क्योंकि हम लोग पहले एज्यूम कर लिए हैं ये कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, so that's why it is like that, car is moving with a uniform acceleration a। So v square equal to u square plus 2as, a is equal to this, put this value in this formula, so you will get m v square minus u square by twice s into s cancel, and ultimately you will get the, so kinetic energy is equal to m by 2 v square minus u square, that is half m v square minus half m u square, that is your kinetic energy. If initial speed is 0, initial velocity is 0, then kinetic energy is equal to half m v square. If not 0, then you have to use this particular formula. That is the way how you, so in case of derivation you have to explain the situation also. Situation, क्या situation है, कार मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, फाइनल वेलोसिटी इतना हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, then you have to apply the formula and derive it. Okay, then best of luck. Try to solve all the question and get this full marks.